Hello children, today I am going to start the new topic, that is division algorithm for polynomials. In this topic, for any two polynomials px and gx, there exist two unique polynomials Rx and Qx which verifies the relation Px is equal to Gx into Qx plus Rx. Here Rx is equal to 0 or degree of Rx will always be lesser than degree of Gx. Means आपने earlier classes में आपने पढ़ा होगा that division algorithm means dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. और जब ये polynomials की बात हम करते हैं तो कोई भी पॉलिनोमियल px को जब हम gx पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं देन वी विल गेट द क्वोशिएंट एज qx एंड द रिमाइंडर एज rx इन टर्म्स ऑफ x. सो ये रिलेशन वेरीफाई होगा कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx मीन्स डिविडेंड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिवाइजर पॉलिनोमियल इंटू क्वोशिएंट पॉलिनोमियल प्लस रिमाइंडर पॉलिनोमियल. ओके, यहाँ पर रिमाइंडर विल इक्वल टू 0, या तो 0 के इक्वल होगा और या फिर रिमाइंडर की जो डिग्री होगी, वेरिएबल की डिग्री होगी, वो हमेशा डिवाइजर की वेरिएबल की डिग्री से छोटी होगी. दिस इज कॉल्ड द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स. यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर फेयर नोटबुक बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज नंबर 2.3. नाउ सी द एक्सरसाइज नंबर 2.3 इन योर टेक्स्ट बुक्स. सी क्वेश्चन नंबर 1. देयर आर टोटल 3 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. नंबर 1, px is equal to x cube minus 3x square plus 5x minus 3 and gx is equal to x square minus 2. Okay, you have to divide px by the polynomial gx to get the quotient as qx and the remainder as rx. आपको डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए px पॉलिनोमियल को gx पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है. ओके, first of all see whether the given polynomial is written in the standard form or not. Standard form means in the decreasing order of the powers of the variables. तो हमें देखना है कि पहले ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है नहीं लगा हुआ. यदि नहीं है तो लगाइए उसको. यहाँ पर हमने देखा x पावर 3, 2, 1 और कांस्टेंट. इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड हियर x स्क्वायर एंड कांस्टेंट. इट इज ऑल्सो इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. देन डू द डिवीजन. x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर plus 5x minus 3 when divided by x square minus 2. Here we see x square multiply by what value to get the result equal to x cube. So we multiply x square by x to get the result x cube. Now the quotient here is x. This quotient multiply by the divisor of the second term of the divisor, that is minus 2. So x into minus 2 will becomes minus 2x. Okay, write down the same terms before the below the same term, that is x यहाँ पर वेरिएबल है तो यहाँ भी x का वेरिएबल आएगा. x स्क्वायर होता तो x स्क्वायर भी नीचे आता. Now while subtracting we will change the sign. This becomes minus and this becomes plus. Cancel out this. Now minus 3x square written as here plus 5x and plus 2x is equal to plus 7x. And the remaining is minus 3. Okay, so x square minus 3s are minus 3x square and minus 3 into minus 2, that is plus 6. Now change the sign. Plus, it will be cancelled. It is minus. So 7x will be remaining and minus 3 and minus 6 is equal to minus 9. Here we see the power of x is 1. But in the divisor, the power of x is 2. So degree of the remainder is less than the degree of the divisor. So it will be the required remainder. So here
quotient that is qx is equal to x minus 3 and remainder rx is equal to 7x minus 9. So these are the quotient and remainder for this part. Okay. Similarly, you have to do the remaining parts of question number 1 yourself. Now see question number 2. In this question, you have to show that the first polynomial, you have to check that the first polynomial is the factor of the second or not. ये फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर है या नहीं है, आपको शो करना है, पता लगाना है, चेक करना है. सो अगर कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है, देन इट विल डिवाइड द सेकंड पॉलिनोमियल कंप्लीटली, और यहां पर रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए. अगर 0 रिमाइंडर बचता है, इट मीन्स द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड, अदरवाइज नॉट. ओके, लेट्स सी. Here all the terms, that is all the variables are written in the standard form, that is decreasing order of their powers. So divide 2t4 plus 3t cube minus 2t square minus 90 minus 12 by t square minus 3. So t square multiply by 2t square is equal to 2t raised to the power 4. And 2t square multiply by minus 3, it becomes minus 6t square. तो इसको t square के नीचे लिखेंगे, then minus cancel, then plus 3t square minus 2t square plus 6t square is equal to 4t square minus 90 minus 12. t square plus 3's are 3t square and 3 minus 3's are minus 9. Okay. Now minus cancel, 4t square here minus 90, it becomes plus minus 12 and plus 9 is equal to minus का 3. Now t square 4's are 4t square, 4 3's are minus 12. Here we see it becomes minus, then cancel, minus 90, it becomes plus, यहाँ क्या बचा, plus का 9. Okay. Here is a small mistake, that 3t cube, here is a 3t cube. So, and 3t cube is here. So, here is 4t square minus 90 minus 12. 4t square minus 90 minus 12. Okay. Now, let's do this again. Here we see t square plus 3t's are 3t cube. Because 3t into t square is 3t cube. 3t minus 3's are minus 9t. Okay. This becomes minus cancel and this becomes plus cancel. Now 4t square minus 12 is remaining. So t square plus 4's are 4t square and 4 3's are minus 12. It becomes minus cancel and it becomes plus cancel. So the remainder is 0. Remainder is 0. Here we see when we divide this polynomial by t square minus 3, then the remainder is 0. So we can say that the first polynomial is the factor of the second polynomial. ठीक है, तो जब रिमाइंडर 0 आता है, इट मीन्स द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल. और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, इट मीन्स द फर्स्ट polynomial is not the factor of the second polynomial. In this way, you have to do question number 1 and question number 2 of exercise number 2.3 yourself in your fair mode. Thank you very much.